Good afternoon, all of you. Good afternoon. Yeah. Okay. Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon. Welcome, all of you. Today we will see the case taking. The case taking of Dr. Praful Vijay sir's case taking, teaching about case taking of Dr. Praful Vijay sir's, and the analysis according to the teaching of Dr. Vijay sir, analysis in fast progressing syphilitic cases, out of control cases, how to analyze these cases, how to select the rubrics according to the type of disease, the miasm, the pathology, and how to repertorize it. Which type of rubrics are important in these cases? Today, I will show you a very much dangerous case and deep pathological case, that is the cutaneous gangrene. इतना फास्ट प्रोग्रेसिंग सिफिलिटिक डिजीज जो आउट ऑफ कंट्रोल था, उसे कंट्रोल में कैसे लाया और 100% नेचुरल क्योर कैसे दिया, ये आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी केस है। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे अप्रोच करना ऐसे पेशेंट में। अगर हम फेल्योर भी होते हैं तो फेल्योर होने के बाद भी कैसे फाइंड आउट करना कि और कैसे समझना कहाँ रॉन्ग हो गए, क्या रॉन्ग हुआ हमारा, उसे कैसे ओवरकम करना, ये सब बातें हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। और ये जो केस है क्यूटेनियस गैंग्रीन, जब सर ने फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें कंपटीशन भी थी प्रोडक्टिव होम्योपैथ्स के लिए, तो वहां पे बहुत से नियर अबाउट 50 डॉक्टर्स ने अपने अपने केसेस वहां पे भेजे थे, जिसका प्रेजेंटेशन सर के सामने होने वाला था। तो उसमें इस केस का सिलेक्शन होना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और सिलेक्शन होने के बाद फिर लास्ट में जब लास्ट 10 केसेस जो मोर डेंजरस थे, मोर क्रिटिकल थे, डीप पैथोलॉजिकल थे, उसमें इस केस का सिलेक्शन होना और उसके बाद इसका प्रेजेंटेशन जब दिया तो सभी ऑडियंस को, पार्टिसिपेंट्स को ये केस बहुत ही पसंद आई और इस केस को फर्स्ट प्राइज मिला। तो इस केस ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छी केस है और आपको भी इस केस में से बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो हम इस केस को देखते हैं, दैट इज द क्यूटेनियस गैंग्रीन। कौन बताएगा कि ये कौन सा पार्ट है बॉडी का? क्या है एक्चुअली, ये कौन सा पार्ट है? Leg, foot foot or leg. It is the thigh. Okay. Yes, it is thigh. So in fast moving fatal illnesses,
fast moving syphilitic diseases, fast moving fatal diseases, out of control diseases, out of control conditions. So in these conditions जो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, और इन केसेस में एक एक मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कहीं रॉन्ग होता है तो नो चांस, पेशेंट को रिवर्स लाना बहुत डिफिकल्ट है. सो इस टाइप के केसेस जो है, लाइक एक्यूट रीनल फेलियर, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, cerebral hemorrhage, fulminant hepatitis, acute appendicitis, trauma-induced hemorrhage, falciparum malaria, dengue, acute respiratory distress syndrome, then aortic dissections, aortic aneurysm, cerebral infarct, anaphylactic shocks. These are all out of control diseases and fast moving fatal illnesses. इनमें बहुत कम चांस होता है, बहुत कम टाइम हमारे पास होता है. तो सर gives 8 steps, each and every cases diseases solve in these 8 steps. कितना भी बड़ा डिजीज हो, कितना भी डीप पैथोलॉजिकल हो, डेंजरस हो, अगर ये 8 स्टेप हम फॉलो करते हैं, राइटली फॉलो करते हैं, तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी केस. तो ऐसे केसेस में ऑलवेज द माइज सिपिलिटी. बट इन दिस केसेस जो आउट ऑफ कंट्रोल है, फास्ट प्रोग्रेसिंग है, इन केसेस में जर्नी ऑफ डिजीज देखना इंपॉर्टेंट नहीं. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू सी द जर्नी ऑफ डिजीज. बट step 3, causation. Causation is important, but वो causation भी कैसा होना चाहिए, recent होना चाहिए, related होना चाहिए. Then step 4, rubrics of miasm at mind, but only syphilitic. We have to select only syphilitic rubrics from mind, from physical, from general in these cases. जनरल्स हमें ऐड करना ही है इन 5th स्टेज. 5th स्टेप में हमें थर्मल थर्स्ट जनरल से ऐड करना है. डिजायर एवर्जन अगर कुछ प्रोमिनेंट मिलती है तो हमें ऐड करना है. बट दिस आउट ऑफ कंट्रोल केसेस लूज देयर कंट्रोल ऑफ माइंड एंड जनरल्स आल्सो, फिजिकल्स आल्सो. सो ये ऑप्शनल है. अगर मिलता है, प्रोमिनेंटली मिलता है, तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज लीव इट. Then physical or generals only pick up the syphilitic rubrics, and afterward repertorize and select the proper medicine, perfect similimum. That is called state similimum also. Yes. So this is the analysis in these cases, and these cases are all emergency cases. और होम्योपैथी के लिए सब जने बोलते हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है सबकी कि होम्योपैथी ये ओनली क्रॉनिक डिजीज में एक्ट होती है. क्रॉनिक डिजीज में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, स्लो एक्टिंग है, बहुत दिन तक लेनी पड़ती है. और यही मिसअंडरस्टैंडिंग हमें लोगों की दूर करना है. We can solve emergency cases, out of control conditions. So ये सॉल्व करने के लिए हमें समझना पड़ेगा इमरजेंसी क्या है एक्चुअली, किस टाइप की होती है, क्या होती है. सो व्हाट इज एन इमरजेंसी? कैन वी ट्रीट एन इमरजेंसी केसेस?
yes, we can treat, but how? We can treat emergency cases, out of control diseases, because homeopathy don't have limitations. होम्योपैथी से ईच एंड एवरी डिजीज क्योर हो सकता है, सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज होम्योपैथी डजंट हैव लिमिटेशन। और जब आप ये केस देखेंगे तो आप रियली समझ पाएंगे कि सही में होम्योपैथी को कोई लिमिटेशंस नहीं। वी कैन ट्रीट ईच एंड एवरी पैथोलॉजी, डीप पैथोलॉजिकल केसेस। तो लिमिटेशन होम्योपैथी को नहीं है, तो फिर क्यों फेल होते हैं आप, है ना? एक केस बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे और नेक्स्ट केस अगर सेम आती है तो रिजल्ट नहीं मिलता है। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वी आर बायस होऊन जातो त्या केसेस बद्दल. आपण सेम सिम्पटम आणि ती पॅथॉलॉजी तिथे वापरतो. सॉरी, आपण जे काय म्हणता येईल सर, सेम वापरतो त्या ठिकाणी सिम्पटम्स प्रेजुडाइज होऊन जातो. प्रेजुडाइज होऊन जातो. That's why homeopaths have limitations because of our knowledge, right? Homeopathy doesn't have limitation. Homeopaths have limitations. हमारे नॉलेज के लिए लिमिटेशंस है, हमारे लिए लिमिटेशंस है होम्योपैथी के लिए। होम्योपैथी डोंट हैव फेलियर। आप देखो, जो पॉलीफार्मेसी करते हैं, जो मल्टीपल ड्रग्स प्रैक्टिस करते हैं, जो रिपीटेशन करते हैं, जो पेटेंट देते हैं, उनको भी रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट देने का तरीका अलग है, रिजल्ट पाने का तरीका अलग है। एक कुछ लेवल तक ही उनको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन दे गिव रिजल्ट। सिंगल डोज वाले भी रिजल्ट देते हैं, जो ओनली मेंटल सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब करते हैं उनको भी रिजल्ट है, जो फिजिकल जनरल्स पे प्रिस्क्राइब करते हैं उनको भी रिजल्ट है। दैट्स व्हाई होम्योपैथी डोंट हैव फेलियर, होम्योपैथ्स हैव फेलियर, है ना? जो थर्ड फोर्थ लेवल तक ही रिलीफ दे पाते हैं, क्योर दे पाते हैं, और अपर लेयर में नहीं दे पाते, that means homeopaths have limitations, failures. If failure comes, अगर हमें फेलियर आता है, फेलियर मिलता है, तो क्या करना चाहिए? तो हैनीमैन ने कहा है, ऑलवेज डोंट बी डिस्करेज, ट्राई अगेन एंड अगेन। और होम्योपैथिकल लैंग्वेज में उन्होंने कहा है, डेयर टू बी वाइज। यस, so this is the case, the history of this patient. A male patient age about 65 years admitted to government hospital. आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं ना? यस सर. Okay. So a male patient age 65 years admitted to government hospital was under allopathic treatment since 7 days. So this 65 years old age patient was admitted in government hospital since 7 days. The patient was having cutaneous gangrene on left thigh region. The lesions was spreading fast. This patient was having history of insect bite, but the exact etiological agent was unknown.
but the condition of the patient was deteriorating very fast. Hence, allopathic doctors has taken decision of amputation. उनके पास एक ही पर्याय बचता है, नहीं कंट्रोल हो रहा, कटिंग. The patient was shouldering the responsibility of the family, and by hearing this physical disability in such poor economical condition, every member was afraid of such situation. They could get reference of homeopathic treatment, yes, which can avoid surgery. अब देखो जहां कहां ऐसी कंडीशन आ जाती है कि क्या करें, वहीं पे बराबर इधर उधर से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रेफरेंस मिल जाता है उनको कि एक बार आप होम्योपैथी ट्राई कर लो, ये डॉक्टर को दिखा दो, वो डॉक्टर को दिखा दो. और जिसके लाइफ में नसीब में बचना होता है ना, उन्हें तो जरूर ये मिल ही जाता है. So they could get reference of homeopathic treatment which can avoid surgery. The patient was brought to my clinic by his relatives. The patient was with very dirty look, with foul smell from his body, and the affected area was blackish, extending up to knee joint. The blackish area, the affected part was blackish in color, extending up to knee joint, with few blisters on posterior region of thigh. There was continuous thin watery foul discharge. A small ulcerative wound was at the site of bite. Simple ऐसे round ulcerative type एक छोटा सा wound था, जहां पे वो पेशेंट बोलते थे कि यहाँ पे कुछ ने भी काट लिया, insect bite. The patient also had severe burning, shooting type of pain, which was lighting light and was coming suddenly and disappearing suddenly, quickly. This led to restlessness, sleeplessness, feeling very hot to the extent that he was removing the wearing and was in need of cold air and demanding for cold water. Appetite was completely lost. That means he was very restless, sleepless because of pain, feeling very hot. That means thermals hot, removing wearings, and was in need of cold air. That means hot patient, demanding for cold water. That means thirsty. Appetite completely lost. So I will show you the video. आपको दिख रहा है वीडियो? No, sir. No. अभी दिख रहा है सर. Okay. See the patient. See the blackish area. This is gangrenous part. काळे चट्टे केव्हा आले? रात्री झाली ही काल नव्हती काही. अच्छा, हो. रात्रीपासून आले. आणि सुजन? सुजन होती पण
सुजन कधीपासून आहे? दिस इज आन्सर. पाणी येते का त्याच्या? See the cellulitis back of thigh at middle side. Age be 7.8. Blood sugar normal, urine report normal, pus cells occasionally. Okay. So this was patient. क्या देखा आपने? कौन बोलेगा? फाइव डेज तक ओनली वहां पे सेलुलाइटिस था. उसके बाद दैट पार्ट बिकम ब्लैकिश होना शुरू हो गया. बैक साइड ऑफ थाई बिकम रेड विथ थिन वाटरी स्टिकी डिस्चार्ज, फाउल स्मेल, और वहां की स्किन निकलना शुरू हो गया. So, according to Dr. Vijayakar sir's 7-layer miasmatic chart of suppression, which is the miasm, that is pure syphility, strong syphility, and the layer, which is the layer? 7th layer. Yes, it is 7th layer disease. 7th layer. Now analysis. क्या देखा आपने केस में? क्या सिम्टम्स हम कंसिडर कर सकते हैं इस केस से? Hot patient. Hot patient. Foul smell of body. Yes, foul offensive smell of body. Dirty look. Dirty look. रेस्टलेस पेशेंट. Restlessness, sleeplessness. Yes. पेन के बारे में बताया सर. कम सडनली गोस सडनली. Yes, pain comes suddenly and goes quickly. So blackish discoloration of skin because of, म्यूट कर रहा हूं सबको. So blackish discoloration of skin, fast progressing disease. Yes, very fast progressing disease. Violent effect, only insect bite की वजह से इतना हुआ, that is violent effect. Thin watery discharge with foul smell, severe burning shooting type of pain, which was lighting like. Pain was coming suddenly and disappearing quickly. Restlessness, sleeplessness, dirty look, elements from insect bite, that is toxins, hot patient, thirsty, appetite loss, and left side. So this is the analysis. इतने symptoms हमें उसकी जो भी हिस्ट्री मिले उस पर से इतने symptoms मिलते हैं. और अकॉर्डिंग टू माइजम, अगर इसमें से कुछ रूब्रिक्स हम सिलेक्ट करते हैं और रेपर्टराइज करते हैं, तो रूब्रिक्स लाइक पेन शूटिंग
starting, lighting quick, violent effect, hot patient and thirsty. So I select these rubrics for repertorization and I put these rubrics in repertorization table, and I got these medicines: aconite, alumina, arsenicum, belladonna, chamomilla, cuprum, hyoscyamus, nux-vomica, and sulfur. So he was hot and thirsty. So aconite, alumina, arsenic, belladonna, cuprum, hyoscyamus, nux-vomica was ruled out. Only chamomilla and sulfur remain. So which is the remedy? So chamomilla, it is very angry patient. Elements from anger, cross and uncivil, quarrelsome, wakes at trifles, pain intolerable, becomes mad with pain, snappish, highly irritable. This patient was not snappish or like this irritable. He was restless, but not having much anger. So chamomilla rule out. And sulfur. तो सल्फर जैसी उसकी कंडीशन थी क्या? So element from suppression of skin disease, patient stoop shoulder, unwashed, untidy, bodies offensive in spite of washing, restlessness, great burning, shooting pain, constipation, left-sided, hot patient, desire for food. Yes. So sulfur is somewhat matching with the condition of this patient, and I prescribe sulfur. Single dose of sulfur was prescribed on 3/9 at 12 noon. And the follow-up after 3 days. Fever, nausea, vomiting. Fever is always welcome sign. So, जैसे fever सुना मैंने, it is good for me. Swelling of leg decrease, again good. Mental restlessness increase, it is not good. He desired to go home with fear of death. Dekho. Now, mind really become restless, really become anxious, having fear of death. अभी तक तो ठीक था, लेकिन अभी उसे लग रहा कहीं ना कहीं माइंड में सबकॉन्शियस लेवल पे कि मतलब वो जो सिपिलिटिक माइजम फिजिकल लेवल पे था, नाउ it is growing in subconscious level. That's why he has fear of death. कहीं तभी लग रहा कि मेरी बचने की उम्मीद कम होते जा रही. So it is bad. Delirium like talking. Greenish stools. देखो, stool becomes greenish. पहले constipation था. Now stool become greenish. This is again bad sign. That means the digestive system is also involving. Increased blackish discoloration of skin. जो पार्ट हमने देखा था गैंग्रीनस, वो उससे डबल हो गया. Of skin with burning pain. Feeling weakness. Yes, weakness काफी बढ़ गया. And the major change, that is thermal change. Now he become chilly. Hot से chilly हो गया because toxicity बढ़ गई. Yes. So this is totally a bad follow. Our sulfur is totally failed. So what to do? So we will see first the video.
1 minute. सरळ सरळ माझ्याकडे बघा. पलटा नाही सरांकडे पलटा. हवा सुटली की थंडी वाजते. हवा सुटली की थंडी वाजते. बर. हां. Yes. The area of gangrene was increased, right? बढ़ चुका. Yes. काफी बढ़ चुका. मिडियल साइड में तो बहुत कुछ हो गया. So here I reanalyze the case and again repertorize with rubrics of. वापस पेशेंट की केस रीएनालाइज किया और नए रूब्रिक्स सिलेक्ट किया. New rubrics was restlessness, anxious, violent effects, fear of death, skin discoloration blackish, stool green color, chilly and thirsty. And I repertorized with these rubrics and got aconite, ethusa, arsenic and carbovage. चारों चिली रेमेडीज मिले, aconite, ethusa, arsenic and carbovage. So which is the perfect one? Arsenic, elements from poisoning, quinine, toxins, fastidious, mental restlessness, anguish, fear of death, despair of recovery, blackish discoloration of skin and gangrene. Aconite, elements from exposure to dry cold air, fear, fright, surgical operations, restlessness, agonizing fear, great anxiety, clairvoyance. There was no clairvoyance or any history of element from exposure to cold air or no history of surgical operations. So aconite rule out. Carbovage, elements from loss of body fluid, bad effect of long ago injury, no history like this. So weakness, dullness, stasis, blueness due to venous stasis, wants spraining. So carbovage also rule out. And ethusa, elements from hot summer weather, unhygienic surroundings, inability to think or fix mind, idiocy, weak nervous, and prostrated from work, violence of all symptoms, profound prostration and stupor, deathly pallor, hot patient. Yes, so ethusa also not covered these conditions. So aconite, carbovage and ethusa was ruled out and arsenic was selected because arsenic is the best remedy for gangrene. It covers all conditions of gangrene. So arsenic 200 in a single dose was given, and after 4 days
I take follow up, patient become violent. Now the patient become violent. That means mind is completely become fail to defense. Anger, violent, and despair. Now patient is going into despair. पहले तो fear of death थी, now he become despair. अब तो मैं मरता ही हूं, अब मैं बचने वाला नहीं. You want to die. और उसने बोल के बताया कि इससे अच्छा तो मुझे मरने दो. Swelling increased. Pockets of pus form below black skin. जितनी ब्लैक स्किन हो गई थी ना, जितना आपने देखा, और उसके और 4 दिन बाद क्या कंडीशन हो गई होंगी आप इमेजिन कीजिए. The thigh, whole thigh, up to below the knee become totally blackish. और उसके जो कॉर्नर्स थे, जहां तक ब्लैकिश स्किन था और जहां से अच्छी स्किन स्टार्ट हो रही थी, वहां पे क्रैक्स होना शुरू हो गया. पूरे जितना भी ब्लैकिश एरिया था, पूरा कॉर्नर्स पे क्रैक आना शुरू हो गया. मतलब जो डेड टिश्यू थे, जो ब्लैकिश पार्ट था दैट इज डेड, और जो लाइव टिश्यूज थे, वो लाइव टिश्यूज ने ब्लैक स्किन को, डेड टिश्यू को छोड़ना शुरू कर दिया. क्योंकि गैंग्रीन का ये कॉमन सिम्टम है कि गैंग्रीन ऑटोमेटिकली बॉडी से लूज कर देती है, छोड़ देना शुरू कर देती है, बॉडी से अलग करना शुरू कर देती है. उसी तरह से जितना डेड टिश्यू था, डेड पार्ट था, उसको बॉडी ने छोड़ना शुरू कर दिया. तो वहां पे क्रैक पड़ना शुरू हो गई, और उस क्रैक में से धीरे धीरे पस आना शुरू हो गया. और जब हमने प्रेस किया उसको, तो पूरा ऐसे पस एकदम पट से बाहर आया. That means जितना भी ब्लैकिश स्पॉट था, एरिया था, उसके नीचे पूरा पस भरे हुआ था. So area of gangrene increased, covering whole thigh up to knee joint. All blackish part or dead tissue was removed. Yes. तो जितना भी वो अलग पार्ट हो रहा था, उसे हमने और थोड़ा कट करके जितना भी डेड पार्ट था, वो पूरा टोटली वहां से निकाल दिया, रिमूव. And about 1 to 2 liter vicarious pus was drained from the site. Yes. ये जब पेशेंट हॉस्पिटल में था, तो पूरे हॉस्पिटल में इतना बैड स्मेल हो गया था कि सभी पेशेंट को वहां से हटाना पड़ा. इतना स्मेल, डेंजरस स्मेल था, और इतना सारा पस, 1 to 2 liter, severe offensive odor of pus, pain increased, fever with increased chilliness because of toxicity. इतना चिलीनेस, इतनी शिवरिंग, शडरिंग पेशेंट को हो रहा था कि पेशेंट ऐसे थार थार बेड पे उड़ता था शिवरिंग की वजह से. Patient's general condition was deteriorated. Severe weakness. Patient was not able to sit. Stool पहले green color की थी, now it become bloody. Urine red color. देखो, पहले ओनली फिजिकल लेवल पे गैंग्रीन था, नाउ इसके बाद धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनल इन्वॉल्व होना शुरू हो गया. नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल टोटली गोज इनटू डिस्ट्रक्शन. स्टूल बिकम ब्लड, एंड excretory system, urine red color, excretory systems also involved in this, goes into destruction. मतलब totally deterioration. One by one body के systems उसमें involve होना शुरू हो गए. Total the case become deteriorating. ऐसे कंडीशन में आप क्या करते ना? फिर भी पेशेंट के रिलेटिव्स का फेथ था कि अभी भी कुछ होता होगा तो करो. और जब हम
पूरी तरह से हताश हो जाते, फेल हो जाते, फेल्योर आ जाता है, निगेटिविटी बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं एक आधा आशा का किरण मिल जाता है। वो मिलता ही है, खाली देखने वाला चाहिए। बराबर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिंक लग जाएगी और वो आशा का किरण हमें दिखाई देगा, खाली उसे समझ लेना चाहिए। तो इस केस में ऐसा क्या हुआ जो इतनी टोटली होप से होपलेस हो गई? सर एलिमेंट फ्रॉम नहीं येत. नो, एलिमेंट फ्रॉम एन इंसेक्ट बाइट था, तो इट इज नॉट कंफर्म। तो इतने डिटेरेशन में जहां पेशेंट कंप्लीटली, जिसे बोलते भी नहीं आ रहा था, ऐसे जब वो कुछ पूछा उसको बात करता था तो ऐसे उसको बात भी नहीं करते आते थे, इतनी शिवरिंग चिलीनेस उसमें था। और ऐसे कंडीशन में मुझे उसने पूछा कि डॉक्टर साहब मैं मतलब इतना शिवरिंग हो रहा था उसको, डॉक्टर साहब मैं कॉपी ले सकता क्या? कॉफी ले सकता क्या? दैट मीन्स ये क्या है? Desire stimulant. स्टिमुलेंट। Strong desire for coffee. Yes, coffee is a stimulant. That means he is suggesting me, advising me कि कहीं तभी अभी भी होप है। Desire, that means psychosis. अभी भी होप है। I want stimulant. मुझे ऐसा कोई स्टिमुलेंट दो जिससे मैं बाहर निकल सकूं। So extreme desire for coffee. और इस उसके डिमांड में, उसके डिजायर ने मुझे और चांस दे दिया। और अगेन मैं आपको इन्वेस्टिगेशन दिखा देता हूं कि उस दिन उसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या थे। HB 7.6, mark this, HB 7.6, neutrophils 79 and blood urea was 89 and creatinine 1.95. That means excretory system goes into destruction, failure. Okay, so this was the investigation of that day. हर तरफ ट्रांसपेरेटिक हो चुका था। आपको वीडियो दिखा ना? नहीं सर, अभी नहीं नो दिखा है। सर. वीडियो नहीं दिखा आपको? नो सर. मैं वापस दिखाता हूँ। ओके, सी द HB 7.6 अभी दिख रहा है ना? यस सर. And blood urea 89 and creatinine 1.9. Rest was normal. Now, now the big question. What was wrong? कहाँ wrong हुआ? क्या wrong हुआ? क्यों arsenic, sulfur become wrong? कहाँ पर गलती हुई?
हिस्ट्री लेने में गलती हुई, मेडिसिन सिलेक्शन में गलती हुई, पोटेंसी सिलेक्शन में गलती हुई, कहाँ क्या हो रहा? So why the well selected medicine failed? Why not cure process has started? पूरा अटेंशन दे रहे केस में, अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन शुरू है, ड्रेसिंग भी हम मतलब कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ ऑइंटमेंट अप्लाई एप्लीकेशन नहीं है, कुछ अदर इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, फिर भी why not cure process has started? तो ये क्वेश्चंस हमेशा हमारे माइंड में आने ही चाहिए जब जहां कहां हमें फेल्योर मिलता है, हम केस को सॉल्व नहीं कर पाते और उसके आंसर्स हमें ही ढूंढने होते हैं, और इसी के आंसर्स दे डॉक्टर हैनेमन ने। वो कैसे? तो इन फास्ट मूविंग फेटल इलनेसेस or fast progressing fatal destructive diseases, find the cause if any, if recent, if related. But if the miasm has bloomed, then cause is not so important as per footnote 120. And consider only syphilitic rubric of mind, physical and general. So in aphorism 176, there are, however, still a few diseases which, after the most careful initial examination, in aphorism 84, 92 and 98, present but one or two severe violent symptoms, while all the others are but indistinctly perceptible. आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, आपने बहुत अच्छी हिस्ट्री लिया, बहुत अच्छी तरह से रूब्रिक सिलेक्ट करके लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई कुछ ना कुछ मिस हो गया, एंड दैट इज दिस। डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि ऐसे केसेस में आपको लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं मिलने वाली रूब्रिक्स की, एक और ज्यादा से ज्यादा दो, 1 और 2 सीवियर वायलेंट सिम्टम्स जो हमारे सामने होते हैं, उसे ही हमें देख के सिलेक्ट करना है, ऑब्जर्व करके सिलेक्ट करना है। सो प्रेजेंट but 1 or 2 severe violent symptoms, while all the others are but indistinctly perceptible. सिम्टम्स तो बहुत रहते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन कौन से सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस देना है, तो दैट इज द सीवियर वायलेंट मोर डीप स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक रूब्रिक्स ओनली. So in fast progressing fatal destructive disease, take whatever is available and prescribe. Do not search for constitutional remedy. These disease where there is 1 or 2 severe violent symptoms, while all others are indistinctly perceptible, take only these symptoms and prescribe. Don't search for constitutional remedy. Don't search for the list of symptoms. Take whatever is present, but syphilitic only. So, अब हम रॉन्ग कहां पे हुए, ये भी हमें समझ में आना चाहिए. जब हम ये समझ पाते हैं कि हम कहां रॉन्ग हुए, क्यों रॉन्ग हुए, देन केस सॉल्व करने में बहुत हेल्प होती है. आप इजीली केस सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि रॉन्ग कहां हुआ. So in first repertorization, I consider syphilitic rubrics giving more importance to generals. आपको फर्स्ट रेपर्टराइजेशन के रूब्रिक्स याद है, क्या लिए थे? फर्स्ट रेपर्टराइजेशन, Dirty look,
That Foul smell of body, pain comes suddenly and goes suddenly, blackish discoloration, violent effect. फर्स्ट यस सो उसमें मैंने सिपिलिटिक रूब्रिक्स तो लिए आई कंसिडर सिपिलिटिक रूब्रिक्स गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू जनरल्स उसमें मैंने जनरल्स को बहुत इंपॉर्टेंट दिया एंड सो द रेमेडी सल्फर वाज पार्सल and hence failed to stimulate the cure. And in second repertorization, because of rethinking given to syphilitic rubrics, along with consideration to psychotic rubric. Well, first repertorization में मैंने only generals को ज्यादा important दिया और second में syphilitic rubrics तो लिए ही साथ में उसके psychotic rubric भी consider किया. And that rubric was stool green color. So rethinking given to syphilitic rubric along with consideration of psychotic rubric also, even though other remedies such as arsenic selected was found to be wrong, hence did not cure the patient. तो ऐसे केसेस में जो फास्ट प्रोग्रेसिंग सिपिलिटिक केसेस होते हैं ऐसे इसमें बहुत थोड़ा टाइम होता है और वो थोड़े टाइम में ही हम करेक्ट होना ही चाहिए और करेक्ट होने के लिए परफेक्ट होने के लिए ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हम क्या कर रहे हैं किस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और कौन सा रूब्रिक है कौन सा सिम्टम है कौन सी टोटलिटी है जो हम छोड़ रहे हैं हर चीज हमारे सामने होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते सो दीज आर द पॉइंट्स जिस वजह से वहां पे क्योर स्टार्ट ही नहीं हुआ फिर अब क्या करना So we all know the whole organism exists on depends. Depends के सिवा कुछ है ही नहीं आपको हर चीज में डिपेंड्स लगता ही है एंड डिपेंड्स इज माइज और ऐसे केस का डिपेंड्स होता है सिपिलिटिक दैट इज सिपिलिटिक and survival against any foreign hostile process foreign hostile force is by function of immunity. इसीलिए डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि we never cure the disease, we only stimulate the vital force, immunity, and that immunity or vital force cure the disease. So survival against any foreign hostile force is by function of immunity. But in this case, the immunity of the patient was completely destructed. In our homeopathy, we do not cure a disease. Our remedy do not cure a disease. We only stimulate the vital force, stimulate the immunity. We only stimulate the patient immunity to cure himself. So, aphorism 19. Now, as diseases are nothing more than alterations in the state of health. Diseases are nothing but only the alterations in the healthy state of man, human organism. So, in the state of health of the healthy individual, which express themselves by morbid signs. And cure is also only possible by the change of healthy condition of the state of health of the diseased individual. It is very evident that medicines could never cure diseases if they did not possess the power of altering
altering man's state of health, which depends on sensation and function. Yes. हमारे मेडिसिन कुछ नहीं करते, हमारे मेडिसिन का एक ही काम है, खाली उसके इम्यूनिटी को, वाइटल स्पोर्स को स्टिमुलेट करना. Indeed, that their curative power must be owing solely to his power of the possesses of altering man's state. अगर वो पावर स्टिमुलेटेड हो गए तो वही उसे जो हेल्थ उसकी डिस्ट्रक्ट हो गई उसे वो मेंटेन कर देगा. So, इतना क्लियरली हैनेमन ने लिख के गए हैं. नाउ व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना है. So I was in need of strong violent syphilitic rubrics from reaction and disposition of mental, physical and general, where the defense of patient become fail. अब उसका डिफेंस कहां कहां फेल हुआ. उसका फिजिकल डिफेंस फेल हुआ बिकॉज ऑफ गैंग्रीन, उसका जीआईटी डिफेंस फेल हुआ, उसका एक्सक्रेटरी सिस्टम का डिफेंस फेल हुआ, उसके माइंड का डिफेंस फेल हुआ. तो वही जहां वो फेल हुआ वही कंडीशन हमें पिकअप करनी है. सो आफ्टरवर्ड आई सिलेक्ट rubric from mind, that is despair. He totally become despair कि अब मैं बच ही नहीं सकता. Then at that condition, despair के स्टेज पे भी, despair के लेवल पे भी उसका रिएक्शन क्या था, एंगर, वायलेंस. वो किसी को पास में नहीं आने दे रहा था पेशेंट. चीजें फेंकना, जोर जोर से गाली देना, सो एंगर बिकम वायलेंट. ये हो गया मेंटल लेवल. नाउ पर्टिकुलर फिजिकल लेवल पे स्टूल बिकम ब्लडी. जहां डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री सिस्टम का डिफेंस फेल हुआ, उस पे, उस स्टेज पे एलिमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रिएक्शन दे, दैट इज स्टूल बिकम ब्लडी. एंड जनरल कंडीशन, जनरल्स पे उसका डिफेंस कहां फेल हुआ, दैट इज जनरलिटी, वायलेंट इफेक्ट. जो भी हो रहा था सब कुछ कैसा था, वायलेंट. डिस्चार्जेस विकैरियस. एंड ऐसे कंडीशन में भी he wants or he desired for coffee, chili and thirsty. So I take this rubric and after hepatization I got 4 medicines, Bryonia, lachesis, Naxomica and sulfur. So Bryonia, lachesis, sulfur are hot and Naxomica is the chili. So I prescribe him Naxomica 200 single dose at 10/9/08 and the follow-up after 7 days. See the follow-up. But जो भी हमारे ग्रुप में यहाँ पे कमजोर दिल वाले हैं वो ये वीडियो ना देखें. कसं वाटतंय, बरं वाटतंय. वीडियो दिख रहा है आपको? नाही सर. नो सर. ओके. कसं वाटतंय, बरं वाटतंय. भूक जेवण तर चालू आहे आता. लागून राहिली, कालपासून खाणं सुरूच आहे, काही जेवण चालू नाही. आहे. झोप, झोप नाही लागत. नाही संडास कशी होऊन राहिली, संध्याशी होते. काल चांगली झाली. चांगली. हिरवी, हिरवी नाही झाली. काळी, काळी नाही झाली.
After Naxomika, stamina increase, sleep become normal, digestion become normal, stool become normal, anger become normal, urine become normal. चांगली होती. बर ते दुखणं कसं आहे त्याच्यातलं? हे सगळे पायच लय आवडून झालेलं. थांबा आवाज थांबा थांबा हलू नका. कितने सारे मसल्स कट हुए, कितने सारे टिश्यूज, टेंडन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज गए. बास कितना कम हो गया? बहुत वास एकदम एकदम बढ़िया हो ना. एकदम कम हो कोई गया. भी सर्जन बोलेंगे ग्राम बस बस झाला झाला नाही काही नाही होत. थांबा काही होत नाही बा. पाहिला ना. आवा घाबरू नका तुम्ही. थांबा ना. उसके अंदर है थोड़ा सा वो फ्लैब निकालना निकल पड़ेगा. जातो. टाका पानी डाल. झालं झालं झालं. डायबिटीज फुटेज पाठ. Dressing with only normal saline water and sterilized pad. काय म्हणता सांगा. Say blood report. HB कितना था? 7.6. 7.6. Yes, sir. In a 11.50. in a 5 days it become 11.5. Yes, sir. This is the miracle of right remedy. Yes, sir. Blood urea. It was 89, now 54 and 1.8 creatinine. So the excretory system is also under control. Normal. Normal. Yes, sir. Yes, HB become normal. Now second follow. अब मिराकल देखते जाओ कैसे हील हो रहा है. कसं वाटतं सांगा. कसं वाटतं सांगा. चांगलं वाटते. भूक ताण झोप. अच्छा. पेशेंट को 8 दिन बाद डिस्चार्ज दिया, फिर उसका डायरेक्ट क्लिनिक में फॉलो. त्रास काही? त्रास काही नाही आता.
इकडं बात नाही. all muscles gain, tissue gain, new tissue formation. आप देखो पूरा गैप जितना भी डीप खड्डा था वो पूरा भर के आ गया. सरळ व्हा. Now he can stand, walk also. सरळ सरळ माझ्याकडे बघा. But slight limping is there. पूर्ण आले ते भरत है ना. पूर्ण जे खड्डा होता तो पूर्ण भरला. हा. See the cleanness of wound without any application or ointment or betadine shower. No use of any allopathic dressing material. It is pinkish जो कलर होता है उनका. It is really a healthy granulation of new tissue. कसं वाटतंय. वाटते तसं चांगलं वाटतंय. बर अजून त्याच्यातून काही निघते का पू वगैरे. नाही. बर दुखणं दुखते का ते. दुखत नाही. बरं अभी देख रहे हैं आप एरिया कम कम होते जा रहा है. राइट. वीडियो दिख रहा है ना आपको. यस सर यस. अभी देखो कॉर्नर से हीलिंग स्टार्ट होगा. ये हील होगा नीचे का टोटल. हीलिंग स्टार्ट एट द कॉर्नर्स. बट अभी जो आप पार्ट देख रहे हैं. यस सर. ये देख रहे हैं कि जो स्किन लेवल है और वुंड लेवल देखो स्किन से ऊपर है. यस सर. जितना भी न्यू टिश्यू फॉर्मेशन हुआ ग्रेनुलेशंस हुआ ये इतना ज्यादा हुआ कि स्किन के ऊपर आ गया. राइट. स्किन लेवल स्किन नीचे पड़ गई. स्किन सरफेस नीचे गया और वुंड का सरफेस ऊपर आया. ऐसे कंडीशन में एलोपैथ क्या करते हैं. ऐसे कंडीशन में एलोपैथ जो न्यू टिश्यूज आए उसको निकाल देते हैं. उसको छिल देते हैं ताकि वो स्किन यूनाइट हो. तो स्किन के जो कॉर्नर्स है वो यूनाइट होने के लिए ये अगर पार्ट ऊपर है तो यूनियन वहां पे होगा नहीं, इसलिए उसको छिल देते हैं. लेकिन ऐसे कंडीशन में अपने
अपने इसमें देखो मैजिक की, उसको कुछ भी करने का काम नहीं, और इतना टिश्यू विदाउट एनी एंटीबायोटिक, विदाउट एनी ड्रेसिंग, और कितना वुंड मतलब क्लीन है, कोई पस नहीं, कुछ नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई डिस्चार्ज नहीं, इतना हेल्दी वुंड। यस सर। कसं वाटते? चांगलं वाटते. हा, चांगलं वाटते. चांगलं वाटते. काही त्रास, जास्त काही नाही. झोप वगैरे व्यवस्थित आहे? झोप येते. जेवण वगैरे? जेवणही चांगलं आहे. बर, चालून दाखवा बरं मला थोडं. तसं पूर्ण पाय टेकत नाही खाली. पूर्ण नाही टिकत आहे. ते आवडलं तर काय देखील. थोड़ा सा लिम्पिंग है अभी भी। बांधून असलं की टेकत नाही लवकर. बांधून चालायच्या वेळेस काही त्रास होते का? त्रास नाही. काही त्रास नाही. थोडा वेळ राहिलं ना काही. कसं वाटतं सांगा? चांगलं हा, चांगलं चांगलं वाटते. चांगलं वाटतंय. हो. पूरा ही भर गया सर। स्किन बराबर आ गई, हेयर सी वैसी आ गई। यस, एरिया कितना काय होते आता? खाज होती की सर. हा, खाज आहे जराशी बहुत जमीन अशी. खाज येते? हो. अजून? की काही नाही. बर, बहुत चांगला भाग आहे. हे इचिंग हो रहा है, दैट इज द सोरिक स्टेज, राइट? सिपिलिटिक टू सोरा। हा, कुठे येते? हे खाज होती. खाज येते साहेब. हे तर हो. बरं. इथं प्रगिनी पडत हे हा इंग्लिश हा हा, लस खाज होती. अच्छा. बाकी नाही काही. हा, चांगलं चांगलं वाटते म्हणलं. चेहरे में देखो कितना फर्क पड़ गया। काही त्रास? खाज होती जरा, बाकी काही त्रास नाही. बर, जेवण वगैरे? जेवण झालं. वजन तर वाढलं तुमचं? आता जेवणात जास्त चालते 2-3 पोळ्या. हं? New skin formation, that is fibrosis. Yes. Fibrotic skin appearing. All wound healed, only 1 inch remains. अभी यहाँ पे एक बात किसी ने मार्क की कि जो हीलिंग प्रोसेस हुई वो बिलो अपवर्ड हुई। Yes. It is right or wrong? Right. इसमें इन राइट है सर।
आपने बताया था सर, स्किन में ऐसा नहीं माना जाता है, बाकी हर जगह है। यस, डाउनवर्ड स्किन के लिए, अल्सर्स के लिए, पैचेस के लिए हेरिंग्स लॉ नहीं होता है। यस, क्योंकि ऑल पैचेस, व्हाइट पैचेस, अल्सर्स हील थ्रू द कॉर्नर्स, और जहां पे कॉर्नर्स वाइड है वहां पे हीलिंग नहीं होगा, जो नियर है वहां पे जल्दी हीलिंग होगा। तो ऊपर जो पार्ट था वो ज्यादा ब्रॉड था, नीचे का कम ब्रॉड था, इसलिए नैरो था, इसलिए वहां पे हीलिंग स्टार्ट हुआ और नीचे से वो हील होते हुए ऊपर कैप्चर हो गया। है ना? एवढंच राहिलं. टोटली हील्ड. सर व्हिडिओ दिसत नाही. नाही दिसत आहे. नाही दिसत. आता कसं हो सर. वाटते? चांगलं वाटते? दुखत नाही येत. दुखत नाही आता काहीच? ते शिरावर आहे त्याच्या जरा चांदणं आलं की ते रोल करते. see the normal walk, no limping is there. मतलब जितने भी मसल्स कट हुए, चालायच्या वेळेस काही त्रास? नाही, त्रास काहीच नाही होत. काहीच नाही होत? नाही. and the last follow. See the last. कसं वाटते? चांगलं. बर. या 7-8 महिन्यात काही त्रास काहीच नाही. नाही? हा आजार होऊन किती वर्ष झाले? मागच्या वर्षी 1.5 वर्ष झालं. मागच्या वर्षी पोळ्यापासून होतं ते. 1.5 वर्ष झालं आहे ना? बरं. आता काही त्रास? त्रास तर सध्या काहीच नाही त्याचा. काहीच नाही. See the normal color of skin, normal मतलब जो फाइब्रोसिस हुआ वहां पे भी नॉर्मल कलर आया स्किन का, और फाइब्रोसिस भी कितना लेस हुआ, नो कॉन्ट्रैक्चर, नो
जो वहां पे थिकनेस आ जाता है स्किन में, कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं है। यस सर। ना नाही त्रास काही नाही तसं. चालून दाखवा. चालतंय. चल. नागराला जात असता खोटं बोलतच नाही. आज घेतली का काही थोडीफार? आज नाही. हा? Yes. Yes. क्या लगा आपको, कैसा लगा? Unmute and share. कौन शेयर करेगा? एनी क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टी, कुछ समझ में नहीं है ऐसा कुछ, या फिर हम आगे चलते हैं. ओके. सर 1.5 वर्षामध्ये कधीच रिपिटेशन नाही करावे लागले? नाही, केव्हाच नाही. सिंगल डोस. ऍक्च्युली हील तर ती 3-4 महिन्यातच झाली, परंतु हा लास्ट फॉलोअप मी 1.5 वर्षानंतर घेतला आणि प्रत्येक फॉलोअप हा ईच अँड एव्हरी फॉलोअप इज टेकन आफ्टर 15 डेज. यस, एव्हरी 15 डेज पे फॉलोअप लिया, मतलब वीडियो लिया. यस. सर ड्रेसिंग केल्यानंतर त्याला पॅड्स वगैरे अप्लाय केले होते का त्याच्यावरून, की फक्त त्याला ओपन असंच सोडून दिलं होतं? नो नो, स्टरलाइज पॅड अप्लाइड. अप्लाइड ओनली. स्टरलाइज पॅड पण ते कोणचे जे हाताने बनवलेले, म्हणजे हा जे स्टरलाइज पॅड जे येतात, सर्जिकल स्टरलाइज पॅड ते नाही. कॉटन आणि गॉज बंडल आणून त्याचे पॅड बनवून ते ड्रम मध्ये स्टरलाइज करून ते वापरले. यस. सो जो फाइब्रोसिस वहां पे हुआ वो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स पैथोलॉजी था कि नहीं? सो रॉबिन्स पैथोलॉजी बेसिस ऑफ डिजीज, healing takes place by fibrosis. Fibrotic stages are granulation tissue formation, after that fibroblast formation, after that fibrosis formation, and lastly fibrosis. So this is the wonders of homeopathy. इस तरह से हीलिंग होना, कंप्लीट हील होना, पेशेंट में किसी बात की एबनॉर्मिटी नहीं रहना, है ना, स्किन भी नॉर्मल है वहां पे, less fibrosis, no contractions. Yes. So this is the wonders of homeopathy. So in this case, a repair or cure started according to Hering's law of cure, as repair process initiated from excretory system, that is kidney, to digestive system, that is intestine, which were totally gone in destruction. There is a significant increase in hemoglobin from 7.6 to 11.5 within 6 days, which is normally not possible. It is usually increased by gram per every week. In this case, fibrosis was minimal with very good skin covered uptake. The truth of homeopathic wonder can be compared by the fact that there is a great difference in the healing process. Yes.
रूटीनली आप देखो हीलिंग प्रोसेस, मोस्टली ऐसे केसेस में जो सर्जन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, राइट। स्किन ग्राफ्ट करने के बाद भी कई केसेस फेल हो जाते हैं, ग्राफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं होता, वापस पस और स्किन ग्राफ्ट निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई स्किन ग्राफ्टिंग नहीं, कुछ नहीं, और हीलिंग कितना हेल्दी था। So the truth of homeopathic wonder can be compared by the fact that there is a great difference in the healing process. Routinely, healing of such large raw wounds takes place by large area covered by fibrosis or no need of any skin grafting. Throughout the healing period, considering such big raw area, there was no evidence of infection or pus discharge during entire period. There is a good melanin pigmentation tends to normal skin color is seen, reaching up to the healing age of the wound. There is no evidence of any contracture or contraction of the soft tissue, and movements of the limbs were absolutely normal, and it was not restricted, which is a possibility which is seen in modern science, modern line of treatment. Yes. So this is the homeopathy. That's why Dr. Vijay sir always says that homeopathy is mathematics. हमारे कैलकुलेशन अगर एक बार परफेक्टली जम गए ना तो मिरेकल 100% दिखेगा. So homeopathy is mathematics, and Dr. Boger is the master of treating pathological cases, deep pathological cases. So Dr. Boger always says things become simpler as one approaches perfection. कितने भी डिफिकल्ट केस हो, कितना भी डीप पैथोलॉजिकल केस हो, हमारा अप्रोच अगर परफेक्ट है तो क्योर होना ही है. So in preface of 6th edition of Organ of Medicine, Dr. Hahnemann said, homeopathy is a perfectly simple system of medicine, remaining always fixed in its principle, as in its practice, which, like the doctrine whereon it is based, if rightly apprehended, will be found to be complete. Yes. अगर हमने right way से use किया होम्योपैथी का तो it is a complete science, therefore serviceable. What is clearly pure in doctrine and practice should be self-evident, and all backward sliding to the pernicious routinism of the old school that is as much its antithesis as night is to day should cease to vaunt itself with the honorable name of homeopathy. Yes, that's why homeopathy become honorable. It is our bread and butter, and it will always be honorable. Yes, so this is homeopathy. Homeopathy कैसे क्या कर डालते. So it is written in Coden, March 28, 1830 by Dr. Hahnemann. So thank you to Dr. Hahnemann. This is this great science, homeopathy, and my guru, Dr. Vijay sir. So thank you very much, all of you. आप लोगों ने आज बहुत टाइम दिया, इसलिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो इस बात पे सब लोग ताली बजाओ, इतनी अच्छी केस आपने देखी. यस, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. तो किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेरी, क्वेश्चन होंगे तो फटाफट पूछो. Thank you, sir. या थैंक यू वेरी मच. कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ, या फिर
आपके हिसाब से कुछ जो मैंने कंसिडर किया था, मैं कहाँ कहाँ रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ, इसमें अगर किसी को और कुछ दिखता है तो वो यहाँ पे बोल सकते, बता सकते हैं। यस, हरिओम, बताइए। अनम्यूट हिमसेल्फ। हाँ, हेलो सर। नहीं, मैंने ताली बजाने के लिए हैंड राइज किया सर। ओके ओके, आप क्या लगा सर? हाँ, या थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई क्वेरी नहीं। सो नाउ वी विल स्टॉप हियर। और एक्सक्यूज मी सर। या सर अभी ये फास्ट मूविंग फेटल इलनेस यानी कि स्टेट सिमिलर में हो गया ना सर? यस यस। लाइफ में उनको सपोज उनको कोई एक्जिमा यानी कि फिर हाइपरटेंशन वगैरह नहीं क्या, उनके लिए अपने को अलग से जीसीएस निकालना पड़ेगा ना सर? यस यस यस, इसके बाद अगर कुछ होता है तो उसे जीसीएस देना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। या थैंक यू। यस, और किसी को कुछ पूछना है? तो हमारा ऑलमोस्ट केस टेकिंग पार्ट खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अभी आगे नेक्स्ट बुक स्टार्ट करना है। यस सर। यस, Yes, तो हम थ्योरी ऑफ सप्रेशन स्टार्ट करते हैं फिर, राइट? yes, sir. यस, ओके। तो कल देखते हैं हम थ्योरी ऑफ सप्रेशन मोस्टली, या फिर केस टेकिंग में और किसी को कोई डिफिकल्टी होंगी तो वो हम अगर होंगे तो फिर कल उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल स्टार्ट द थ्योरी ऑफ सप्रेशन। हाँ सर, रुशाली बोलते हैं। हाँ बोल। हा सर, मला तुमच्या पेशन्सचे खूप कमाल वाटते. खूपच जास्त पेशन्स ठेवला सर तुम्ही. 3 ते 4 महिने एवढं पेशन्स खूप तुटून जातो. पण तुम्ही खरंच त्याबद्दल तुमचं खूप कौतुक सर. खूप खूप अभिनंदन. खूपच छान केली केस. खूपच मिरॅक्युलस रिझल्ट आहे. पण पेशन्सचं सर मी आधीपासून पाहिलं, मी तुमच्याकडे पण प्रॅक्टिस करत होती. तुमचे खूप करेजियस प्रॅक्टिस करता तुम्ही एकदम. ते त्या गोष्टीसाठी तर मी हॅट्स ऑफ आहे सर तुम्हाला. तुम्ही खूपच जास्त पेशन्स एवढे ठेवता की म्हणजे नॉर्मल कोणी असं असलं तर त्याचं पेशन्स कदाचित तुटून गेलं असतं. एवढं पेशंट डिटोरिएट होतोय दोन्ही वेळा, किंवा त्यांचे पेशंट नातेवाईक पण वेगळ्या नजरेने पाहत असतात. तेव्हा जेव्हा आपण जातो फॉलोअपला आपण पाहतो की नातेवाईक, पण त्याच्यातही एवढं करेजियसली पुढे जाऊन ट्रीट करणं खूपच कठीण आहे. थँक्यू सर. खूपच शिकायला भेटलं आम्हाला. कोणी असं म्हणजे रिॲक्शन कारण सगळेजण एकदम निशब्द झालेत एवढी छान केस पाहून, म्हणून बहुतेक कदाचित. थँक्यू. ऍक्च्युअली थँक्यू सर. तुमचे पेशन्स तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअरन्सवर डिपेंड आहे. तुम्ही तुमचे कन्सेप्ट किती क्लियर आहे. तुमचे अगर कंसेप्ट आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप में पेशेंस भी आएंगे. इसलिए पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, होम्योपैथी को अच्छी तरह से समझ लो, तो ऑटोमेटिकली पेशेंस भी आ जाता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है. यस यस, सो ओके, थैंक यू वेरी मच. कल हम वापस मिलेंगे 4 बजे, राइट? ओके, बाय बाय, सी यू. यस सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर. कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, यस सर. यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए किस चीजों पे ज्यादा हमें जोर देना पड़ना? पढ़ाई, रीडिंग. पढ़ाई से सब कुछ है. नॉलेज इज द पावर. रीडिंग रखो, कंटिन्यूअस रीडिंग होना चाहिए. यस, ओके, चलो, थैंक यू.